Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं कारोबार, अर्थनीति और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं वी रवि कुमार। RBI Governor Shaktikant Das says the central bank has not exhausted its ammunition on key rate cuts and the monetary policy stance will continue to be accommodative. Equity benchmark Sensex and Nifty log marginal gains as monthly derivative contracts expired amid lackluster global cues. And oil prices remain stable amid the landfall of Hurricane Laura in the US. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक का रुख एकोमोडेटिव बना रहेगा और दर में कटौती या नीतिगत कार्रवाई के लिए सभी विकल्प खुले रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बावजूद घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ हुए बंद और अमेरिका में चक्रवर्ती तूफान के आगमन के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल के दाम रहे स्थिर। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए बैंक की प्रतिक्रिया सूझबूझपूर्ण रही और उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक का रुख आने वाले दिनों में एकोमोडेटिव बना रहेगा और दर में कटौती या नीतिगत कार्रवाई के बारे में सभी विकल्प खुले रखे जाएंगे। आज मुंबई में बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र से संबंधित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बैंक स्थिति की निगरानी कर रहा है और इस बारे में एक आवश्यक योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र मजबूत और स्थिर बना रहेगा। उन्होंने बैंकों को उन क्षेत्रों पर ध्यान देने की सलाह दी जिनमें वापस उछाल की क्षमता है। उन्होंने आगाह किया कि महामारी बैंकों की बैलेंस शीट पर दबाव डालकर उनकी पूंजी में कमी ला सकती है। उन्होंने कहा कि ये ज्यादा जरूरी है कि बैंक इस चुनौती का सावधानीपूर्वक सामना करें। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान सामान्य परिचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। If you look at the bank's advisory, the Finance Ministry has asked public sector banks to monitor cases where insolvency proceedings could be initiated against individuals who are guarantors of corporate debtors that have defaulted on loans. The Insolvency and Bankruptcy Code, IBC, provides for a time-bound and market-linked resolution of stressed assets. The code also provides for initiation of insolvency proceeding against personal guarantors of corporate debtors, even though the provision has not been used much by lenders to recover dues. In an advisory, the Department of Financial Services has asked public sector banks, PSBs, to consider putting in place a mechanism for monitoring the cases which may require initiation of individual insolvency process before the National Company Law Tribunal, NCLT, against personal guarantors to corporate debtors. Recently, the NCLT's Mumbai bench allowed State Bank of India, SBI, to initiate insolvency proceeding against Anil Ambani as a personal guarantor to recover 1,200 crore rupees dues from two companies promoted by him. And one of the top stories that is ruling the headlines today is the GST meeting. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said entire GST compensation gap of 2,35,000 crore rupees of this year can be met by the states in consultation with RBI. After chairing the 41st GST Council meet, she said, once the arrangement is agreed upon by the GST Council, dues will be cleared fast and also take care of the rest of the financial year. The Finance Minister also said the other option given to provide a special window to states in consultation with RBI to provide the 97,000 crore rupees at a reasonable rate of interest, which can then be repaid after 5 years from collection of cess. She said the two options were placed before states so that each state does not have to struggle for loans. Ms. Sitharaman said states have requested to lay down both options in detail and give them 7 full days to deliberate on it and get back.
These options will be available only for this year. In April 2021, the Council will review and decide action for the fifth year. Finance Secretary Ajay Bhushan Pandey has said GST collection has been severely impacted due to the COVID pandemic. Now to discuss the story online, we are joined by AKB. A.K. Bhattacharya is the Editorial Director of Business Standard. AKB, welcome to Market Mantra. AKB, are you online with us? AKB, can you hear us? AKB, आप हमारे साथ लाइन पर हैं जुड़े हुए? लगता है कि संपर्क का हमारा छूट गया है। यहाँ पर श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि आज कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, जिसमें खास तौर से जो जीएसटी को लेकर बैठक हुई है उसमें कई सारे फैसले लिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी है कि राज्यों के साथ जो 2,35,000 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति का जो राशि है उसका निपटारा किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर आपस में बैठकर इस मसले का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा एक और अहम खबर आज की ये है कि वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को यह सलाह दिया है कि वो दिवालिया कानून के तहत उन सभी जो व्यक्तिगत ऋण में चूक करता है उनके खिलाफ संभावनाओं को तलाशा जाए ताकि उन पर इस कानून के तहत कार्रवाई शुरू की जा सके और उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई करके बैंकों का जो धन है वह वापस उनको मिल सके। And Manoj, one of the major stories that we mentioned today is GST. Of course, GST was a major tax reform which was launched on the 1st of July 2017. And I think we are joined by AKB once again. Let's try. AKB, are you online with us? AKB, you're live with us. Can you hear us? Yes, I am there. Yeah. Yeah, hi. So obviously the GST story is one of the major stories today. One of the main things that has come is this 2,35,000 shortfall, which is basically the 3 lakhs total minus the cess of 65,000 crore. There are two options which are being talked about. Can you explain to the audience what these two options are and what would a state look at while evaluating these two options? Well, the two options are there because the state's capacity to get the compensation cess and assess their shortfall will be different because not all the 30 states will have the same revenue problems. So therefore the two options have been given. One option is based on what is going to be the shortfall in the compensation cess compared to the GST Act mandated revenues, which is a 14% growth rate. And the other one is the gap that will arise because of the COVID-19 situation. So that's why the gap will range between 97,000 crore and 2.35 lakh crore. So some states may have a gap of entire 2.35 lakh crore, but some states which are doing better, they may see the gap to be only at 97,000 crore. So therefore the options have been given to the states to exercise which route they want to take, because after all, remember, this is a borrowing, but this borrowing will be met through compensation cess to be levied beyond the 5-year period. So the takeaway from this is that the compensation cess, which is levied over and above the peak rate of 28% on all sin and luxury goods, probably will have a longer lifespan than one had thought that they would end in 2020-22. Because these extra borrowing that the states will make will be met through these extra compensation cess to be collected beyond 2022. So that, to my mind, is a big takeaway. We have to see how states respond to the two options that will come after 7 days. So that's it's a big uncertainty because so far in the first 4 and 5 months, the states haven't got a single paisa of
compensation cess transferred because of the revenue collections have just tanked. So if this issue is resolved, then I would imagine that the states will feel that they are on more certain grounds. Although their revenue problems will not go away, they have to borrow more, and the RBI will help them borrow more. So the expectation is that probably states will be able to borrow at the same rate at which the center borrows. AKB, if you see when on 1st July 2017 when it was launched, there was this understanding or rather an agreement that the center will pay compensation for 5 years, which would probably go until 2022. But the Attorney General in the meeting today said that the gap cannot be met from the consolidated fund. And I'm seeing a lot of responses from states saying that they should not be asked to borrow, as you mentioned, that it will have to be borrowed and the cess will continue for beyond the 5-year period than the originally anticipated date. So how do you see this in this perspective? Well, you know, all decisions in the GST Council are taken collectively. Barring one or two occasions, all decisions have been taken by consensus. This is going to be a contentious issue where many states, particularly those not ruled by the BJP, will be very keen that the center takes the borrowing load and not the states. But as you rightly pointed out, the Attorney General has advised that under the GST Act, this is a load that cannot be borne by the center. So the option that has been given by the center at the GST Council is that the states will borrow and the center will facilitate that borrowing so that their compensation cess shortfall is taken care of. So it is going to be an issue going forward. I would not be surprised if some states raise objections to the manner in which the states are being asked to borrow and pay for this duty. I would not even be surprised if the states might make it into a constitutional issue they may take it up in the Supreme Court. So you know, all possibilities are there. But given the fact that a proposal of this nature was put forward in the GST Council, and given the fact that the voting pattern in the GST Council is such that politically the BJP-ruled states, along with the central voting strength, can probably take a decision in favor of what the center wants to take. AKB यानी कुल मिलाकर इसे आम सरल लोगों की भाषा में समझें तो आज की बैठक कुल मिलाकर क्या रही, कितना पेचीदा है यह मामला और क्या इसका समाधान निकल सकता है अंततः? देखिए, ये मामला तो पेचीदा है, आपने सही कहा है, और इसमें जैसे मैंने कहा कि जीएसटी काउंसिल में सारे जो निर्णय लिए जाते हैं वो स्टेट्स के और सेंटर के साथ एक समन्वय के साथ सारे निर्णय लिए जाते हैं। पर जो स्टेट्स की जो इस समय जो पार्टियां वहां पे रूल कर रही हैं, अगर आप देखें तो ऐसे स्टेट्स के पास, हर स्टेट के पास करीबन 1.5 या 1.25 वोट होते हैं और हर डिसीजन को पास करने के लिए 3/4 डिसीजन का एक अप्रूवल लेना पड़ता है कि 3/4 का डिसीजन लिया जाए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर केंद्र की जो प्रपोजल जो है वो मैं समझता हूं कि जीएसटी काउंसिल में पारित होने की पूरी तरह से एक संभावना दिख रही है। पर अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कोई माहौल बने जहां पे काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं, क्योंकि आज के जीएसटी काउंसिल के शुरुआती दौर में ही आसाम एक बीजेपी रूल स्टेट है, पर आसाम ने कहा कि सेंटर क्यों नहीं इसका बोरोइंग रिक्वायरमेंट लेगा। बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जो कि काफी कमेटियों के मेंबर हैं, उन्होंने भी ऐसे कुछ, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं बिहार के। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इश्यूज जो है ये काफी पेचीदा है, पर इस वक्त जो लग रहा है कि ये 2 प्रपोजल देने से स्टेट शायद इनकी गौर करें इनके ऊपर
और ये इसका एक निर्णय कोई ज्यादा कोई कानूनी मामला में अगर फंस जाएगा तो मैं समझता हूँ स्टेट को भी काफी दिक्कत होगी, पर इश्यूज जो हैं वो काफी पेचीदा हैं और स्टेट के लिए ये एक बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल एक चैलेंज रहेगा कि किस तरह से वो अपनी बोरोइंग लें और बोरोइंग लेकर अगले साल में जो कॉम्पेंसेशन सेस लगने लगेंगी उनसे उनका पूर्ण करें। AKB, if you see the pattern in April, the GST collections came down sharply, almost 72% lower year on year from the April last year. Then May it came down to 38% drop. Then June it came down to 9%. In July, however, we saw that drop increase to 17%. So we had 87,000 crores out of collection. Do you see that getting reversed back to the earlier pattern of dropping? Well, so far we have seen that the contraction that you saw in the first month of the financial year coming down with every month, and probably it will reach the same level of last year by the middle of the year. But remember that the compensation cess is levied on sin goods, luxury goods, non-merit goods, which is a consumption that is always hit the most in situations like today's, where people don't make a discretionary spending. They don't want to buy a luxury car if they can live with a normal car, and the compensation cess is levied on a luxury car. So similarly, if people can make do with one luxury item less, so the consumption levels have come down. So therefore, the impact of a lower consumption on GST collections is disproportionately higher on compensation cess levy goods, because there the consumption has been hit even more. So therefore, instead of an expectation of a compensation cess collection of 3 lakh crore for the full year, the government is now expecting a collection of only 65,000 crore. So in other words, the shortfall in compensation cess will be 2.35 lakh crore, and this is based on the assumption that the recovery in demand for these luxury goods, the sin goods, the non-merit goods will take longer to come back, while other category of items, the consumer durables, consumer non-durables, perishable items, food items, those consumption will recover faster, and so therefore the GST collections on those items will probably come back to the last year's level faster. Maybe from the second half you can say that it will come, but shortfall there will still remain. But on the GST compensation cess items, the consumption recovery will be more delayed, and which is why the big concern for the states, because states depend a lot on the compensation cess. As I said, almost 3 lakh crore of taxes are to be transferred to the states in the current year. AKB, thanks so much for joining us online and giving us clear insights into the developing GST story today. That was AK Bhattacharya, Editorial Director of Business Standard, who was joining us live on Market Mantra. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। चलते हैं शेयर बाजार की ओर। पहले घरेलू शेयर बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बावजूद घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर लिवाली तेज रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बीच हुए कारोबार के अंत में सेंसेक्स आखिरकार 40 अंक यानी 0.1% की बढ़त लेकर 39,113 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10 अंक यानी 0.08% बढ़कर 11,559 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों पर ध्यान दें तो बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 0.35% लाभ में रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में कोई खास कमी या बढ़त देखने को नहीं मिली। Equity benchmark Sensex and Nifty today paired most of their intraday gains to end marginally higher as monthly derivative contracts expired amid lackluster global cues. After touching a high of 39,327 during the session, the BSE Sensex declined amid selling pressure in the last hour of trade. The Sensex finally finished at 39,113, up 40 points or 0.1%.
the NSE Nifty inched up 10 points or 0.08% to close at 11,559. In the broader market at the BSE, the mid-cap remained almost flat, while the small cap gained 0.35%. IndusInd Bank was the top gainer in the Sensex pack, rallying 6.6%, followed by M&M, SBI, HDFC, Axis Bank, Sun Pharma and Maruti. On the other hand, ONGC, Bajaj Auto, RIL, Kotak Bank, Ultratech Cement and Bharati Airtel were among the laggards, shedding up to 1.5%. Sectorally, the BSE Realty Index rallied 6.63%, followed by auto, consumer durables, healthcare, bankex, finance and industrial indices. After opening higher, the markets continued to trade in the positive zone in the afternoon session as traders were encouraged by RBI Governor Shaktikanta Das's statement that the new resolution framework is expected to give durable relief to borrowers amid the COVID-19 crisis. However, market participants turned cautious as August futures and options contracts expired and cues from global stocks were not positive. Experts added global investors are awaiting cues from U.S. Federal Reserve Chairman Jerome Powell's speech at the central bank's annual Jackson Hole Symposium. Officials in the past have used the meeting being held online this year to make market-moving announcements. In the last 5 sessions, the Sensex has gained 893 points, while the Nifty has climbed 247 points. Rajiv, are you there with us? Yeah. Rajiv, a lot of talk is about this Jerome Powell statement, which should be actually on right now as we speak. What is it that the market is expecting this particular impact of what Jerome Powell says? Well, the expectation is that it's going to be dovish. They are going to say that if economy requires more push-up, credit in terms of more loose monetary policy, they are going to continue with it. And more than that, what market is essentially looking forward is that whether the stimulus package which was announced at the start of the COVID in US, probably is going to continue. So that is what market is essentially looking forward. If they say that, okay, money machines, printing machines are going to be on, so market probably is going to rejoice even more, because the way markets are moving on the push by the liquidity, I think that is what is markets likely to would love to hear for another couple of quarters. We are getting this news that the Federal Reserve has actually approved a new strategy that will effectively set aside a practice that it has followed for more than 3 decades to preemptively lift interest to head off higher inflation. So if that is true, and then how does that impact the world economy? That the government of the US, the Federal Reserve, is not going to preemptively raise rates to target inflation. Well, if they are not going to preemptively raise target, that means it's another way of saying that, okay, we are going to continue with soft monetary policy. And as we speak, the dollar index has crumbled down. It's down by almost 50 basis points, 54 basis points. So it's clear that, the money printing is going to happen, and we are going to see more, I think, at least in terms of the liquidity rally, I think it's going to continue. I mean, there's going to be push. But that increases the risk. We should always remember that if you look at wherever it has been done after a certain period of time, liquidity and the divergence in the liquidity and the fundamentals become so large that it's very tough to justify those kind of valuations which happen across asset classes and across the world. I mean, both in developed and emerging markets. So I think probably this bubble which has now liquidity driven, and this divergence will increase further, and a point of time will come then when probably we are building the base for a all of a sudden crash. Not today, I mean, maybe 3 or 6 months down the line, 7 months down the line. But probably we are building again the base for a correction which probably might happen any day. Again, then that also would be triggered by a statement or an off-the-cuff remark by US Fed saying, oh, things are turning better and let's stop printing money. श्रोताओं, हमारे साथ अभी फोन लाइन पर हैं शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे घरेलू शेयर बाजार में आज की गतिविधि पर। एक और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी का रुख देख रहे हैं, लेकिन घरेलू बाजार थोड़ी सी बढ़त के साथ बंद हुए हैं और खासतौर से रियल्टी इंडेक्स है उसमें 6.5% से अधिक की बढ़त हुई है। क्या रहे मुख्य कारण आज रियल्टी इंडेक्स में बढ़त के? पहली बात तो आज थी अगस्त सीरीज के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी, तो उस वजह से अगर आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। शॉर्ट पोजीशन बाजार में थी तो वो कवरिंग के लिए आई हैं, कल भी आई थी,
तो उसकी वजह से बाजार तेज रहा। जहां तक आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है रियल एस्टेट, कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। कल जो पहले क्या होता था, कोई स्टॉक अगर बैन में होता था तो उसके जिसकी लॉन्ग पोजीशन है वो अगले महीने में रोल ओवर कर सकता था। आज वो रोल ओवर भी नहीं है, अगर वो शेयर बैन में है तो उसमें रोल ओवर भी नहीं करा जा सकता था, उसको पोजीशन को खत्म ही करना था। तो रियल एस्टेट बिकॉज एक ऐसा सेक्टर है जिसका कोविड का इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहा है, खराब रहा है, पहले ही वो प्रेशर में था और बिकॉज ऑफ कोविड थिंग्स हैव टर्न बैड फॉर देम, इवन वर्स फॉर देम, उसकी वजह से काफी शॉर्ट पोजीशन थी। तो ये रैली इस कोई उम्मीद में कि रियल एस्टेट में बहुत तेजी आ जाएगी या डिमांड बढ़ जाएगी या बिल्डर्स ने प्राइसेस करेक्ट कर दिए हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी की वजह से नहीं थी, बट सिंपल रीजन था कि स्टॉक्स को आप रोल ओवर नहीं करते, शॉर्ट पोजीशन थी, इसलिए आपको शॉर्ट पोजीशन अपनी काटनी पड़ी। और इंडेक्स इसलिए बढ़ गया क्योंकि वन ऑफ द हैवी वेट ऑफ रियल एस्टेट इंडेक्स जो है वो डीएलएफ है, डीएलएफ बढ़ गया तो डीएलएफ की वजह से आपको इंडेक्स में भी उछाल दिख रहा है। जी अदरवाइज कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है स्टॉक्स के ऊपर जाने का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी आइए चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां चीन को छोड़कर अन्य प्रमुख बाजारों में बिकवाली तेज रही। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.1% तक घाटे में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.9%, हांगकांग के हिंगसेंग में 0.8% और जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.4% की गिरावट हुई। उधर निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.6% ऊपर उठकर बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक नरमी थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और जर्मनी का डेक्स दोनों 0.3% नीचे थे। फ्रांस का CAC 40 भी 0.5% नीचे ही कारोबार कर रहा था। US stocks today surged, pushing the S&P 500 to its fourth straight record closing high as investors stayed focused on large cap momentum stocks that have outperformed since the onset of the coronavirus pandemic. The Dow Jones Industrial Average gained 0.3%, the S&P 500 rose 1%, and the Nasdaq Composite Index surged 1.7%. रुपए पर ध्यान दें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 48 पैसे मजबूत हुआ है, 73 रुपए 82 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। उधर डॉलर इंडेक्स 0.17% कमजोर हुआ, 92.84 पर आ गया। डॉलर इंडेक्स विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति को दर्शाता है। Oil prices today remained almost stable amid a hurricane in the Gulf of Mexico, which made a landfall in the U.S., forcing oil rigs and refineries to shut down. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $45.50 per barrel, while WTI crude prices were around $43.10 per barrel. चलें सर्राफा बाजार की ओर तो दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही है। सोने का मूल्य 743 रुपए उछला 52,508 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 3,615 रुपए बढ़कर 68,492 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य थोड़ा सा कम हुआ, $1,946 प्रति आउंस के स्तर पर आ गया। चांदी $27.38 प्रति आउंस के पूर्व स्तर पर टिकी रही। बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी हम समझना चाहेंगे। सोने और चांदी की कीमतों पर आज भी तेजी है। कुल मिलाकर अभी सोने का स्तर किस दिशा में जाता दिख रहा? कुछ दिन तक जब तक ये फेड की मनी प्रिंटिंग मशीन जारी रहेगी और डॉलर की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो सोना, चांदी और जो बाकी मेटल है, बिकॉज वो डॉलर में उनकी सेटलमेंट होती है, तो उसके एडजस्टमेंट के लिए लगता है तब तक बढ़ते रहेंगे। बट बहुत कोई रैपिड इंक्रीज या जो पिछले साल में हमने देख लिया सोने में, अगले साल वो देखें उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से राजीव, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज। Thank you, Rajiv, for joining us live on Market Mantra and discussing the stories that we were covering in this edition. Before we close, a reminder of the headlines that we covered in this edition. RBI Governor Shaktikanta Das says the central bank has not exhausted its ammunition on key rate cuts and the monetary policy stance will continue to be accommodative. Equity benchmarks Sensex and Nifty log marginal gains as monthly derivative contracts expired amid lackluster global cues. And oil prices remain stable amid the landfall of Hurricane Laura in the United States of America. And that's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.